Chapter 2 Polynomials, Remainder theorem. If Px be a polynomial, if Px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number, a be any real number, then polynomial Px is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is PA. In lower classes, you know the concept dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This you know. How will you check the divide? Okay. So here dividend we take px polynomial को अपन dividend, linear polynomial is a divisor, gx into quotient qx plus remainder rx. So what is px? If you divide by x minus a into qx plus rx. Now here you see that degree of divisor. What is the degree of divisor? कितनी है? पावर कितनी है इस पे? 1 है. तो जब भी रिमाइंडर बचता है तो डिवाइजर से कम बचता है, तो जो रिमाइंडर की डिग्री होगी तो डिग्री ऑफ Rx क्या होगा? 0 होगा, 1 से कम होगा. मतलब कि क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा. Rx इज इक्वल टू क्या होगा? R होगा. नाउ पुट इन दिस, तो Px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू qx प्लस r. नाउ यू सी दैट ये 0 कब बनेगा? इसमें x को अपन क्या रखते हैं? a रखते हैं. लेट पर्टिकुलर केस लें. पर्टिकुलर केस इफ आई टेक x इज इक्वल टू a, तो pa क्या आ जाएगा? pa इज इक्वल टू a माइनस a इंटू qx प्लस r. एनीथिंग मल्टीप्लाइड a माइनस a 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 प्लस r. तो रिमाइंडर क्या आ गया? pa इज इक्वल टू r. This is the remainder theorem. NCERT example question number 1. By remainder theorem, find the remainder. Find the remainder when Px is divided by Gx. Px दिया हुआ है, Px is equal to x to the power 4 plus 1. Divisor दिया हुआ है, Gx is given to you x minus 1. Now what is the remainder? You know, PA is equal to remainder by remainder theorem. PA is equal to remainder. How will you find this? Instead of A, here क्या है?
1 है तो यू मेक इट, इसको निकालने का तरीका, यू मेक इट gx 0, सो x minus 1 0, तो रियल नंबर क्या आ गया, x is equal to 1, इसको पुट इन 1 कर दीजिए। तो पुट इन 1 करेंगे तो जहां पे भी x है वहां क्या लिखेंगे 1, t1 is equal to 1 to the power 4 plus 1, 1 plus 1 is equal to 2 is the remainder. Now same I will change the question, अब इसको एक्चुअल डिवीजन से निकालते हैं। सेम क्वेश्चन बाय एक्चुअल डिवीजन, चेक बाय एक्चुअल डिवीजन ऑल्सो, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड कोशेंट, रिमाइंडर थ्योरम से कोशेंट नहीं आता, फाइंड कोशेंट एंड remainder when x to the power 4 plus 1 is divided by x minus 1. So dividend को अंदर रखते हैं ब्रैकेट के, x minus 1. How will you divide? 8th क्लास में आपने सीखा है, इधर पावर क्या है x4 and here it is power 1. How will you make x minus 1 को x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x4 हो जाए, x4 minus x cube, so multiplied by x cube, so it becomes x4, x cube इधर कहीं नहीं है, we write it inside. Now denominator sign, नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, this will cancel out. Now write the equation in the descending order, x cube plus 1. Now here it is x cube and here it is x, so which number, which x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब हो जाए, x स्क्वायर से करेंगे, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, so minus x square put inside. Now change the sign of second equation. Now see, this is cancelled out, arrange in descending order, x square plus 1. Now here x square and here it is x only, so you have to multiply by x square minus x, so plus x square minus x is not there, put aside, change the sign, minus plus, arrange in descending order, x plus 1, here it is x and here it is x, same, we want x only, so we multiply by x minus 1, so multiply by 1, so x minus 1, change the sign, minus plus, so remainder is, this is remainder and this is quotient. If you want to verify it, this is called px, this is called gx, this is called qx, this is rx. By remainder theorem we get remainder 2, but when the question asks in actual division, then you calculate by this method, otherwise you simply put the real number, whatever it is 2, 3 in the equation, you will get the remainder. So we continue exercise 2.3. Exercise 2.3 NCERT. Question first. Find remainder. Only you have to find remainder when this is the polynomial given to you, x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by 3 parts. I will do. First I will take second part, x minus 2.
This is px, this is x. This is polynomial in degree 3, this is linear degree 1. So how will you find a real number? x को क्या पुट करें कि रिमाइंडर आ जाए? तो कैसे निकालेंगे? दिस डिवीजन को मेक इट x minus 1 by 2 is equal to 0. So x is equal to 1 by 2. Put in equation 1. इसको अपन क्या नाम देते हैं? px. जहां पे भी x है वहां क्या रख देंगे? wherever x you put 1 by 2. 1 by 2 रिमाइंडर आ जाएगा 1 by 2 का क्यूब प्लस 3, 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 3, 1 by 2 प्लस 1, 1 by 2 का क्यूब 1 by 8, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 into 3 3 upon 4 plus 3 upon 2 plus 1, nothing is there, upon 1. Take 8 LCM. 1 4 2 जा 8 plus 6, 2 4 जा 8, 4 into 3 12, 1 divided by 8 multiplied by 1 8. So कितना आ गया? 2 12 plus 8 20 plus 6 26 plus 1 27 upon 8 is the, this is the remainder. This is the remainder. Now I will take third part. What is written? X only. It means what is the value of x? किससे इक्वेट करते हैं? 0 से करते हैं अपन. तो x is equal to 0. Put in 1. p0, 0 का क्यूब 0, anything multiplied by 0 plus 0 plus 1. This implies p0 is equal to, remainder क्या है? p0 is equal to 0. Fourth case, if x plus pi is given to you, so what is the real number? How will you find? X plus pi is equal to 0, x is equal to minus pi. Put in 1. So p minus pi is equal to minus pi का क्यूब प्लस 3 into minus pi का स्क्वायर प्लस 3 into minus pi plus 1. So how will you write? Minus pi cube, minus का क्यूब is minus pi cube, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो ये हो गया 3 pi स्क्वायर minus 3 pi plus 1. This is the remainder. Now fifth part. Now fifth part of this. Fifth part. 5 plus 2x. This is also a linear polynomial, degree 1. So what is the real number? क्या पुट करेंगे x की जगह? How will you find? Make it equated 0. 5 plus 2x is equal to 0. 2x is equal to minus 5. X is equal to minus 5 by 2. इसको किस में रखते हैं? Put in 1. We get p minus 5 by 2 minus 5 by 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5 by 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 by 2 प्लस 1. माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस क्या आएगा? माइनस 125 अपॉन 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25 into 3 75 अपॉन 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1 कुछ नहीं है तो नीचे 1. टेक 8 LCM. नाउ सी ये तो माइनस 125, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 75 150, 150 2 को 4 8 से डिवाइड किया 4 into 15 minus 60 plus 8. Now you see here this is the two terms of 50 plus 158 माइनस इसको करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस 185
अपॉन 8 इज इक्वल टू 185। 15 में से 8 गया 7 और 1 कैरी दिया 7 में से ये 5 गया 2 माइनस 27 अपॉन 8 is the remainder. Is the remainder. Question 2. Find the remainder. Find remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. It is also a linear polynomial. Simple. Equate x minus a is equal to 0. You will get x is equal to a. Okay, इसको आप px मान लीजिए. This is equation 1. Put in 1. So pa क्या रिमाइंडर दे देगा a cube instead of x you write a minus a square plus 6 into a minus a. So a cube minus a cube plus 6a minus a. A cube cancel out. 6a minus a is 5a is the remainder. 5a is the remainder. Now question number 3. Check. Question number 3. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. ये क्या लिखा है? फैक्टर. What is factor? If I tell 12 is 3, suppose 6, 4, 3, 2. Example 12. 6, 4, 3, 2 is a factor of 6 or not because the remainder is 0. And 12 को क्या कहते हैं अपन? 12 किसका मल्टीपल है? 6 का भी मल्टीपल है, 4 का भी, 3 का भी. इसको आप ऐसे भी पूछ सकते थे क्वेश्चन 3x cube plus 7 is a multiple of this or not? So in both question, if I change the question, 3x cube plus 7x is a multiple of 7 plus 3x or 7 plus 3x is a factor of this. The method is same. See here. ये इसका factor है, it means it is completely divided. ये equation से complete divide होगी. Same procedure. Put 7 plus 3x is equal to 0. You have to find the value of x from here. 3x is equal to 7. So x is equal to minus 7 by 3. Minus 7 by 3. x क्या है? minus 7 by 3. Put x is equal to minus 7 by 3 in polynomial 3x cube plus 7x. So 3 minus 7 upon 3 का क्यूब प्लस 7 minus 7 by 3. 3 का क्यूब और 7 का क्यूब 49 into 7 minus 343 upon 27 into 3 minus 49 upon 3. This 3 is cancelled out. So minus 343 upon 9 minus 49 upon 3. Take LCM 9 minus 343. 3 3s are 9 multiplied by 3. 9 3s are 27. 3 4s are 12. 147. 147. Now add it. 7 3s are 10. 7 plus 3 10. 9 minus 10 9 and 490 upon
9. So it is, so the answer is x7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x, is not a factor of this.